सभी लोगों को नमस्कार। एंड वी ऑल नो दैट every week on Saturday 8 p.m. we keep some topic, either social or political or economical, make some point of discussion to come out with something new, especially the protestic viewpoint and neo humanistic viewpoint. So with that in mind, today's discussion is preserving democracy. That is the heading. The point is the imperative of independence governance. स्वतंत्र शासन संस्थाओं की अनिवार्यता। जितने भी संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक हैं, जो मेन पर्पस रहता है कि हम एक संविधान बनाते हैं और उस संविधान के तहत हम अपने कार्यकलाप करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द रूल ऑफ द लॉ। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि एक बार संविधान के एम्ब्लेम को पढ़ लिया जाए। तो हिंदी में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ समाज की बात है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी में इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। और ये जो था और आत्मा अर्पित करते हैं, which we call in English the Constitution of India preamble. We the people of India, having solemnly resolved the constitute India to a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, that is social justice, economical and political, liberty, that is liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then we talk of equality of status and of opportunity and to promote among them all. Now you just see how it is practically happening. लास्ट में था fraternity, that is ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this is the preamble of our constitution. हम अक्सर देखते हैं कि संविधान की ही लोग शपथ लेते हैं इन ऑफिसेस में। तो संविधान बनाया गया सबको एक साथ लेकर चलने के लिए और बेस्ट ऑप्शन डेमोक्रेसी को चुना गया और उसको एक संवैधानिक तरीके से चलाने का निर्णय किया गया। तो समाज का मतलब आप सब जानते हैं, सभी को आगे बढ़ाना, सभी को ले करके चलना। चारों तरफ यदि गंदगी हो और हम अपने घर में चैन से नहीं रह सकते, कभी पड़ोसी लोग कराह रहे हों तो हम अकेले खुश नहीं रह सकते, इसलिए सबको लेकर के एक संवैधानिक ढंग से आगे चलने की बात कही गई थी। डेमोक्रेसी में भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने लिया है कि हाउ द इंडिपेंडेंट जो हमारे विभाग हैं वो कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या ऑडिटर जनरल, ये जो चार जो मुख्य स्तंभ हैं, दे शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देन डेमोक्रेसी विल बी अ हेल्दी सिचुएशन। कई बातें आती हैं कि क्या आज एक नैतिकवान, महान सेवक, व्यक्तित्व का धनी, विदुषी मनुष्य क्या पॉलिटिक्स में चुनकर आ सकता है? क्या विधायिका में चुनकर आ सकता है? ऐसा माहौल बनाना किसका काम है? तो
आज की जो स्थिति है ये डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग केवल उसी बिंदु पे बात करेंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र शासन संस्थाओं की अनिवार्यता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एंड ऑडिटर जनरल, ये जो विभाग हैं। तो ये हम जानते हैं कि द इम्पेडिमेंट्स फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव, executive, judiciary, and auditor general is a crucial for combating exploitation and corruption in a successful democracy. Here is, I would like to brief कि एक सफल लोकतंत्र में शोषण और भ्रष्टाचार के निपटने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और महालेखा जो डिपार्टमेंट होता है उसका। यहां बताया गया है कि प्रत्येक शाखा महत्वपूर्ण क्यों है। फॉर एग्जाम्पल विधायिका शाखा, तो विधायिका शाखा जिसमें आमतौर पर निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि कानून विशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के हितों के बजाय सार्वजनिक हित की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकारी शाखा को उसके कार्य के लिए जवाबदेह बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधायी निरीक्षण आवश्यक है। तो ये मैं स्लाइटली इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं कि मेनी ऑफ अस हैव नो बैकग्राउंड। सो आगे आते हैं जो कार्यकारी शाखा है। सो जैसे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कार्यकारी शाखा है, कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक स्वतंत्र कार्यपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों को निष्पक्ष और बिना पक्षपात के लागू किया जाए। इसके अलावा एक कार्यकारी जो अनुचित प्रभाव को से मुक्त है, वह अपने स्वयं के रैंकों और सरकार की अन्य शाखाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चला सकता है। इसी तरह से न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की व्याख्या करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उचित और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों के साथ उनकी संपत्ति या राजनैतिक संबंधों की परवाह किए बिना कानून के तरह समान व्यवहार किया जाए। इसके अलावा एक निष्पक्ष न्यायपालिका सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकती है और इसकी शक्ति पर नियंत्रण प्रदान कर सकती है। एक और आता है डिपार्टमेंट महालेखा जो विभाग है, जिसको हम ऑडिट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो महालेखा परीक्षक जो है ये समान निरीक्षण निकाय होती है, सरकारी वित्त और संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑडिट और जांच करके महालेखा परीक्षक जैसे कहीं बर्बादी ना हो रही हो, धन की धोखाधड़ी हो ना रही हो, भ्रष्टाचार के मामलों की पहचान कर सकता है, जिससे सार्वजनिक धन की सुरक्षा हो सकती है और सरकारी संस्थाओं में विश्वास को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये इन 4 डिपार्टमेंट का काम है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट when each of these branches operates independently and effectively, they serve a check and balance against each other, preventing any single branch for accumulating too much power or engaging in abuse. So this system of checks and balance is essential for maintaining the integrity of democratic governance and combating exploitation or corruption. So without it, there is a risk that individuals or groups without government could abuse their authority for personal gain, undermining public trust and the rule of the law. So this I briefed only because the subject was such today. So we are on the subject how important is how the imperative of independent governance institutions like, as I told you, executive, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेखा विभाग. So with this brief,
I expect from you to give your दादा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दादा इलेक्शन कमीशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ईसी एंड ईडी ये किस में आते हैं क्योंकि आजकल ये इनका बहुत बोलबाला है तो मैं इसलिए जस्ट आई वांटेड टू आस्क yeah, दैट yeah. They are also the एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैं ये लोग. एग्जीक्यूटिव में सारे आ जाते हैं क्योंकि इनका काम ही है न्याय को लागू करना. So they all come in executives. ओके I'm not the expert, but I think so because DAM, SP, they all belong to the same rank and they become what you are seeing today. But yes, there is a department. There are many small departments, and though they are main departments. For example, अभी आपने बहुत सही कहा चुनाव आयोग, which is a very critical department today, at least during the election. एंड आप कहते हैं तो फिर मेरे को एक बात याद आती है कि इनमें कुछ तो प्रॉब्लम है. So we will not go politically. We will say that how important it is with certain example. I'll start with an example because you were asking and you were asked a very valid question. ये है कि जैसे एग्जाम्पल अभी किसी ने सजेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष कराने के लिए एक निष्पक्ष संस्था का होना जरूरी है और उसको चुनने में ये डिपार्टमेंट जो है वो कारगर होंगे. लेकिन ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को नजरअंदाज करके बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी they made a law, and that law is so you can say one-sided that it is very obvious, and which is a common sense point. There is nothing very rocket science in this decision. The people have seen, and अभी recently तो बहुत कुछ है जो आ रहे हैं, and I think आम पब्लिक धीरे धीरे जागरूक हो रही है, and unfortunately election is there. So may I request anyone on the topic that how important is that ये जो संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंट काम करें तो अच्छा रहेगा. आप में से कोई भी बोल सकते हैं. एनीवे सो एनीवे आगे बढ़ते हैं, हम ही आगे बढ़ाते हैं. तो देखिए व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके इंडिपेंडेंट नहीं रहने से क्या होगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो यदि सरकार के स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, महालेखा विभाग, ये सब यदि हैं कि यदि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं. तो शक्ति का दुरुपयोग कैसे हो सकता है. तो स्वतंत्रता के बिना सरकार की एक शाखा या व्यक्तिगत नेता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाली एक कार्यकारी शाखा विपक्ष को दबाने या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई में हेरफेर कर सकती है. यदि न्यायपालिका और यदि मिल जाते हैं दो डिपार्टमेंट विधायिका, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है. अब आते हैं भ्रष्टाचार. स्वतंत्रता की कमी सरकारी संस्थाओं के भीतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. जब महालेखा परीक्षक जैसे निरीक्षण निकाय स्वतंत्र नहीं होते हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में नजरअंदाज कर सकते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, या उन्हें छिपा सकते हैं जिससे इन्हें अनियंत्रित रूप से अपनेपन पनपने का मौका मिल सकता है भ्रष्टाचार को. तो इसी तरह से कानून के शासन का जो क्षरण होता है, कानून के शासन को कायम रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है. क्यों? इसके बिना कानूनी निर्णय कानून की निष्पक्ष व्याख्या के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं. इससे मनमाने या अन्यायपूर्ण फैसले हो सकते हैं जिसे कानूनी व्यवस्था और कानून के तहत सामान्य न्याय की अवधारणा में विश्वास कम हो सकता है समाज का. तो दैट इज व्हाई दिस डिपार्टमेंट्स हैज टू बी इंडिपेंडेंट.
सो कानून के शासन का क्षरण हो सकता है। जैसे कानून के शासन को कायम रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। इसके बिना कानूनी निर्णय कानून की निष्पक्ष व्याख्या के बजाय, सुन लीजिए पॉइंट को, यदि इनमें इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो इसके बिना कानूनी निर्णय कानून की निष्पक्ष व्याख्या करना जो उनका काम है, इसके बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। इससे मनमाने या अन्यायपूर्ण फैसले हो सकते हैं, जिससे कानूनी व्यवस्था और कानून के तहत समान न्याय की अवधारणा में विश्वास कम हो सकता है। इसी तरह से एक और इसकी खामियां है, एक तानाशाही प्रवृत्ति भी आ जाती है। कब आती है? सॉरी, जब सरकार की एक शाखा शक्ति को मजबूत करती है और नियंत्रण और संतुलन को समाप्त कर देती है, तो यह अधिनायकवाद या तानाशाही को जन्म दे सकती है। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। निगरानी और जवाबदेही प्रदान करने के लिए स्वतंत्र संस्थानों के बिना नेता अपने अधिकार में अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे उत्पीड़न और मानवाधिकारों का हनन हो सकता है। अब एक और पॉइंट है कि सार्वजनिक विश्वास की भी हानि होती है यदि ये एजेंसियां इंडिपेंडेंट न रहें तो। लाइक सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता की कमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को खत्म कर देती है। क्योंकि कॉमन सेंस तो सबके पास है, वो समझता तो है, भले व्याख्या न कर पाए। तो नागरिकों का अपनी सरकार के से मोह भंग हो सकता है, जिससे नागरिक जीवन में भागीदारी कम हो सकती है और संभावित रूप से सामाजिक अशांति को बढ़ावा भी मिल सकता है यदि एजेंसियां इंडिपेंडेंट काम नहीं करें तो ये सब कुल मिला करके, नाउ आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू टॉक, तो सब कुल मिला करके सरकार के स्तंभों के बीच, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लेखा विभाग, स्वतंत्रता की कमी के परिणाम स्वरूप प्रणालीगत कमजोरियां हो सकती हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, शोषण को बढ़ावा देती हैं और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती हैं। तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि ये जो संस्थाएं हैं उन लोगों के प्रति स्वतंत्र और जवाबदेह रहें जिनकी वे सेवा करते हैं। सो दिस इज इन ब्रीफ। may I request again any of you to talk on the subject, क्योंकि आज हमारे मेन स्पीकर्स कहीं व्यस्त हो गए। सो हरानंद दादाजी हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट टुडे ही कुड नॉट कम। यस मीतू सिंह दीदी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दादा, नमस्कार टू एवरीबडी। सो एम आई ऑडिबल? बिकॉज यस पीछे यस हम लोगों ने कूलर चला रखा है, अभी एसी स्टार्ट या नहीं दीदी, की। ऑडिबल ऑडिबल। ओके ओके ओके। सो इफ यू गिव मी लिटिल बिट मोर टाइम देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन, अदरवाइज आई जस्ट पुट few points in brief. Okay दीदी, you explain. Okay. So actually in India, these are the units, as you have said, UPSC, Election Commissioner, then CAG, Controller, Auditor General, Judiciary, RBI. These are the units which are actually very independent. And if we look at it in deep, we find these are the important pillars by which the country runs. All these are in very, very important pillars. Rest of the units which are there in the country, these are the functional unit, but these are the pillar unit which the government has taken a very wise decision while making the constitution, that it kept these units independent. So that is the best part of it. And if we see how it works, so the institutional independence has an inverse relationship with the external influences over the authorities. It has got an inverse relationship. That means the lesser the influence, the higher will be the scope of functional autonomy. Institutions are necessary for the healthy functioning of political and economic democracy, but they come into conflict while exercising their independence that we all know to make social welfare meaningful. The problem is very compounded. Why the problem is compounded? Because the institution needs two things which is very important. The line between independence and autonomy is very thin. What they want is that the main the automatic funding of the institution should be there.
without having to depend on whims of minister and their civil servants. This is true. This is actually true that these units, whether we talk about the judiciary and all, they are totally dependent on the government regarding their fundings. It also means that the head of the institute, there is another point which is also very, very important, because Parliament also sometimes exercise some control over the way these institutions function. So there is another thing which is again problematic in this whole exercise, that once the head of the institution, if he is appointed and it has a fixed tenure, then he can be removed only for his incompetence or his immoral acts. But what actually happens is that there is a government control over their appointment, their removal. That is a part which is very disturbing, because by the time he takes charge, he understands what the program is and start working. If it doesn't suit to the government authority, he is gone off. We have seen it with the IAS also. They are also there, but the IAS are within the government system. So in practice, what we find is that there's a gap exists between the expectation and actual performance. Or we can say there's a gap that exists between what is written in the constitution and what is practiced in the field. And there are several things. But the major thing is that the functionality of autonomy, because independence and autonomy, these are two different things. Independence is okay, you are independent, but autonomy should also be given to them so that they can take the decision for themselves. So India has to re-examine the way they have given the institutional independence, because what we find is that there is a regular communication between these independent units and the government, which has to be avoided. There comes another question of security and threat, direct communication, security and threat, and the last thing which they do is they try to make the entire unit corrupt for their own benefit. So the paradox is that while institutions are necessary for the healthy functioning of the political and economic democracy, when they seek to exercise their independence to make social welfare meaningful, they come into conflict with the executive, which arguably is the most powerful of the various institutions. This power, as we know, arises from the control that it exercises directly or indirectly over the power to appoint or remove the heads of institution and their boards. So what I want to emphasize is that there are two things which should be given initially, that should be given the major importance. That is, the funding should be automatic. They should not depend on the funding. Second is the positioning and removing of the heads of the institution, that should also be within the autonomous body, not by the government of India. So for these things, these are the structural changes which are required to be done. So government has to re-examine the entire structure of the independent organization, their funding, their removal, their appointment. So this is all, Dada, what I want to say. Thank you. Thank you very much, Dada. Namaskar. Yeah, thank you so much. You rightly said, overall, the lack of independence and autonomy makes it very difficult to work and among the pillars of the government, and which leads to corruption and less faith in democracy people exhibit. So may I request Rakesh ji to talk on the subject? Unmute yourself, please. Thank you. मेरा कहना है क्या दादा कि आप सबों ने ये कहा कि ये सारे इंस्टीट्यूशन का ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा जो न्यायपालिका का भी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इनको ऑटोनोमस कर भी दिया जाए तो बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है। जैसे कि न्यायपालिका ऑलमोस्ट उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, बहुत कम उसका हस्तक्षेप होता है उसमें भी, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट जो है न्यायपालिका ही है। इतने दिनों से इतने हजारों केस, लाखों केस पड़े हुए हैं,
लोगों का जितना क्या कहते, सजा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा दिन तक जेल में पड़े हुए हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। कोई मतलब नहीं है इस क्या कहते हैं केवल ऑटोनोमस, नथिंग टू डू, केवल ऑटोनोमस करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो फिर ऑटोनोमस होना काफी मतलब मेरा कहना है कि ऑटोनोमस होना ही केवल सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए मॉरलिस्ट होना, ईमानदार होना भी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आप बोलिए जी दादा। यस यस, गुड हाँ, पॉइंट। थैंक यू थैंक यू। ओके, आएंगे कि प्रउत क्या कहता है। प्रउत, जब प्रउत आएगा तब की बात कहता है, आज वो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता है। बट यस, यू राइटली सेड कि देयर आर सम फैक्टर्स लाइक मोरालिटी हैज टू बी देयर। यस, एनीबडी एल्स? अजय दादा कुछ बोलिए। हाँ, ओके। एक्चुअल में मैं सुन रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा, मैं इस फील्ड में मेरा इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे कि अ, जो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसमें पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है। बट एक्चुअल जो डिफरेंस बनाता है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है कि 90s में, 92 93 में सबने नाम सुना होगा टीएन शेषन। जी जी जी। टीएन शेषन, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, वो उसके बाद ही पता लगा कि इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में कोई चीज है। राइट। जो और दूसरी बात जो है, और अभी भी हम आजकल देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर कह लो या इन्फ्लुएंस कह लो, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे मितु सिंह दीदी ने बहुत राइटली कहा कि जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, फंडिंग गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वो एक जो है ना, जस्ट प्रेशर एक किस्म का रहता है। और हम देख रहे हैं कि आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, या कि 200 300 रुपए करोड़ रुपए का जो है उसको जो है जस्ट सब कुछ जो है कवर अप कर लिया। कवर अप इन द सेंस कि उनको जो है जस्ट अरेस्टेड एंड ऑल। और जिसको कहा जाता था 5-6 हजार करोड़ का है कहीं, और उनको जेल में चक्की पीसेंगे, बट द आउटपुट इज कि हाँ भाई उन्होंने जाके उनको पॉलिटिकली हैंडशेक कर लिया, तो एवरीथिंग इज कवर्ड। व्हाट आई वांट टू से इज कि जो पॉलिटिकल प्रेशर्स है इनके ऊपर जो रहता है वन और अदर वे, मेनली ड्यू टू सर्टेनली फंडिंग एंड देयर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि उनमें बेस्ड हैं। अब जैसे चाहे आप जुडिशरी लो, इलेक्शन कमीशन लो, ईडी लो, सीबीआई लो, हर एक में अगर हम देखें कि कुछ ना कुछ जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऊपर रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अभी देखो कि मैं एक जगह बल्कि आर्टिकल पढ़ रहा था कि जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का हुआ, तो उसमें जो है जिस लोगों ने लॉजिक्स कह दिए हुए कि उस पर्टिकुलर पार्टी के इतने एमपीज हैं तो पर एमपी जो है इतना उनको मिला, और बाकी छोटी छोटी को उनको इतना मिला, तो पर एमपी तो उनका ज्यादा हो गया, तो उन्होंने गड़बड़ ज्यादा की है। जस्टिफाइंग। या मतलब मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू कि किस तरह से आई वॉश भी किया जाता है इस तरह से। बट द थिंग इज कि जस्ट आई 100% जो जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मैं कह सकता हूँ वो ये कि ऑटोनोमस होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का फंडिंग और उनकी अपॉइंटमेंट से कंट्रोल आउट होना जरूरी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द पर्सन, द मेन जो कंट्रोलर है उन ऑटोनोमस यूनिट के, दे शुड बी स्पिरिचुअलिस्ट फर्स्ट। क्योंकि जो मेरी मान्यता है वो ये कि स्पिरिचुअलिस्ट मोरलिस्ट होगा ही होगा। मोरलिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट होगा या नहीं होगा वो अलग इशू है, क्योंकि जो मैंने जितना जाना है, बाबा ने जो कहा है कि जो गॉड सेंटर्ड फिलोसफी जो प्राउड है, उसमें यह है कि उसमें स्पिरिचुअलिस्ट होना ही होगा, तभी वो इंडिपेंडेंटली ऐसी इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर फ्रॉम दीज एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड ऑल। जो जस्ट जो मुझे लगता है, तो आई जस्ट बहुत समय नहीं लेते हुए, लेकिन सिर्फ मैं एंड में यही कहूंगा कि सर्टेनली ऑटोनोमी शुड बी देयर फॉर फंडिंग। नंबर 2, जो कंट्रोल है उनकी पोस्टिंग का, दैट शुड बी आउट ऑफ द गवर्निंग, जो गवर्नमेंट के हाथ से आउट होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, the persons who are heading these institutions, top
4 or 5 persons, they should be 100% clean. उनका कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्योंकि और तो हम किसी के माइंड में तो झांक के देख नहीं सकते कि हाँ भाई ये कितना मोरलिस्ट है, कितना क्लीन है, बट एटलीस्ट देयर जितना भी उनका करियर है, क्योंकि जो जो हेड करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, नेचुरली वो उनकी एज जो है 54-55 प्लस तो होगी, लास्ट के 4-5 साल में होंगे, तो उनके पूरे कैरियर में कहीं पे भी 1%, 0.1% भी इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से तो हम यही देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो, फंडिंग उनकी इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ हो, ओके, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके बिना जो है बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि दैट शुड बी देयर। That's what I wanted to say. Thank you very much. Thank you so much, Dada. You have come to the very crux of the, because Prout says that democracy can be successful only where the following essential factors are present. जैसे हमारे पहले दादा ने कहा, among at least कहा जा रहा है कि कम से कम 51% लोगों में, among the voters, there has to be morality, there has to be literacy and social, economic, political consciousness. Otherwise, it is an instrument to befool the public, and that is happening today. Then, though we are following the political democracy, I'm coming to the Prout view, but economic democracy without which works with decentralized economy, which is a very fundamental difference in the views of Prout. So this, most of the problems are because there is a centralized economy and centralized politics as well. So Prout says that if we decentralize the economy and centralize the political power, and that too how? Politics of partyless system of democracy, which is अभी सारा जो लफड़ा हो रहा है because of the party. I am supporting my party, my people, my government, the state in which my government is there. So entire jhagda is from there only. So Prout suggests partyless system of democracy, which sole purpose is to serve people in true sense of the term service. That is, selfless service is the job of all political, judiciary, and executive or bureaucrats. So in economic democracy, the economic and political powers are bifurcated, as I told you, and that is Prout advocates political centralization and economic decentralization. I am repeating it because there has to be clarity. So political power is vested with the, as you told, moralists, but economic power is vested with the local people. So the principal goal of the administration is, अब executive का क्या काम रहेगा? So their principal goal of administration is to remove all the impediments and obstacles which prevent the economic needs of the people being met. So the universal aim of economic democracy is to guarantee the minimum requirements of life to all members of society. And this is the basic minimum requirements. After that, democracy starts. And after that, the three principles which Prout says, that morality, literacy means education. Literacy doesn't mean know the ABCD. And socio-economic political consciousness, the three factors which are essential for democracy. Before that, the primary requirement is through constitution, as at least basic minimum requirements of the people has to be guaranteed. And after that comes उम्मीदवारों की योग्यता. ऐसे इतनी छोटी छोटी कॉमन सेंस बातें हैं. तो there is no what you call उनकी कोई योग्यता की बात ही नहीं है, मेरिट की कोई बात ही नहीं है. Anybody can stand. और वित्त पर सख्त नियम लागू करें, क्योंकि अभी आपने आज का ही न्यूज या कल का न्यूज था, हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, वो कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है
कि मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा हूं. Anyway, there can be 100 reasons. I don't want to go in that. But if the statement of such a person, I mean, the party is so wealthy, and if they say that because I do not have money, I cannot fight election, then there is a serious point that ये समझना होगा कि वित्त पर सख्त नियम लागू करें. और आज ये सिचुएशन ऐसी है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है टू फाइट एन इलेक्शन, चाहे वो कितना भी विदुषी हो, मतलब बहुत ही विद्वान हो, मॉरलिस्ट हो, लेकिन पैसे नहीं रहने से. दिस ऑल बिकॉज ऑफ द सिस्टम विच नीड्स टू चेंज. व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स वी नीड टुडे इज मॉरल विथ 360 डिग्री माइंड का होना चाहिए, हृदय का विशाल होना चाहिए, है ना. सो टेक फ्रॉम रेशियल, आई मीन आजकल की जो मानसिकता कैसी होनी चाहिए, आई एम टॉकिंग फ्रॉम प्रौध पॉइंट ऑफ व्यू, तो टेक फ्रॉम रेशियल माइंडसेट टू अ इंक्लूसिव न्यू ह्यूमनिज्म माइंडसेट. देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है. फ्रॉम जेंडर hegemony to the gender cooperation. Females are the 50% of the civilization. People should never forget for a moment even. From competition to cooperation. And today, because of the competition, people are using all sort of nonsense, साम दाम दंड भेद, जिसको आम तौर भाषा में बोलते हैं. And there has to be people let leave kind of attitude has to be there. And then the leader should be that there, as you told, कि material consumption or from dogma to well-being of spirituality. इस तरह की लीडरशिप जब तक क्रिएट नहीं होगी, तब तक ये उम्मीद करना कि उन्होंने गुस्से में कह रहे थे कि मॉरलिस्ट होना जरूरी है, एनाटॉमी से क्या होगा. तो ऑल बेसिक रीजन इज people are not having certain human qualities like morality. From old, and the leaders should be from only humans to humans plus nature, जिसको हम न्यू ह्यूमनिज्म कहते हैं. इस तरह की सोच होनी चाहिए. Who can create opportunity for all. That is very important. Everyone's career. Not that हम किसी को खिला रहे हैं, अब उसको जिंदगी भर हम उससे उधार देके या दान देके खिलाते रहेंगे. That is not the aim. So reduces inequality. Does leader use language of humanity or race? That is very important. How our leader talks, whether he divides people in races or he talks of the exclusive humanity. Does he or she uses the language of humanity or race? बहुत important. So, ideally speaking, Dada, the people, if they ask them, if there is no bhatta, there is no pension, there is no salary, let the local people take care of their basic needs. जिनको वो भेजते हैं चुन करके. आप देखिए कितने लोग पॉलिटिक्स में जाने के लिए एग्री होते हैं. Nobody will be there. So you rightly said that many basic reforms are required, and that's the fundamental change is required. और उसके लिए मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और एक दो दिन में होने वाला नहीं है. We need to have a 3-tier approach. जैसे इन्होंने बोला कि पहला अप्रोच तो है कि आपको सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बातें भी करनी पड़ेंगी मॉरलिटी की, और सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जो इमोरलिस्ट हैं वो सही डायरेक्शन में चलें. लेकिन लंबा रेस का घोड़ा बनाने के लिए, जैसा हम लोग आजकल अक्सर ये बात करते हैं कि 2047 when India will become 100 years old independent country, we will be a developed country. A developed country बोलने से नहीं होगा. There has to be a very micro level planning, and the very first planning is the morality. So unless right from the kindergarten school, which is the formative age for every citizen to start building personality, from there to university level, moral education must be a compulsory. So that after 20 years, when these kindergarten boys and girls come as a young citizen, then the world will be different. And there you can expect the changes, which is a noble change. So that is what was coming to my mind, and I wanted to talk. Anybody else, please, on the subject? मैं पूनम दीदी से तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ. पूनम दीदी, where are you? नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार दीदी, दादा. आप बोलिए, इसके बाद इतिशा दीदी बोलेंगे. हाँ दीदी बोलिए. सभी को नमस्कार.
नमस्कार दादा, मुझे बोलना नहीं है, मैं क्लैप कर रही हूँ आपके लिए. You just spoke so well. I was listening very patiently. थैंक यू दीदी, दादा थैंक यू दीदी. या पूनम दीदी बोलिए. दादा, जो प्राउड की चीजें वो तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है? अगर हमने काम किया है, मैं एब्सोल्युटली. पूरी जीवन जब मैंने पूरा दान कर दिया, पूरा समाज, लोग जैसे बोलते हैं सेवा कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं जनता की सेवा कर रहे हैं, और यही करना है. अगर आप एक नेता बनते हैं कहीं भी, तो लीडर का मतलब यही है कि आप जन सेवक हैं. जब आप जन सेवक हैं, सेवा करना है, तो आप अपने इंटेलेक्ट से या अपने फिजिकल वेल्थ, जो भी चीजें आपके पास है, उससे आप जब सेवा कर रहे हैं, तो फिर उस चुनाव के प्रचार के लिए अगर मैंने काम किया है, उसमें इस प्रचार को करने के लिए इतने वेल्थ की आवश्यकता क्यों है? उस वेल्थ को अगर डेवलपमेंट में लगा दिया जाए, तो प्रचार तो अपने आप ही हो जाएगा. ये जो लोग इतना चुनाव में खर्च कर रहे हैं, और बाकी जो हमारा सिस्टम है, वो तो मानना पड़ेगा कि हर तार कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है. जैसे आजकल जजेस रिटायर करके, रिजाइन करके और जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए. क्यों? ऐसा फर्क है वहां, ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपको इतनी सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं को निश्चित रूप से वहां से थोड़ा सा कम किया जाए, और जो मेहनत कर रहे हैं उन तक उन सुविधाओं को पहुंचा दिया जाए. बस अगर ये सिंपल सा काम कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे. जिस लोभ से हम जा रहे हैं वहां, आखिर अगर मेरे अंदर ये तमन्ना है कि मैं भी एमपी बनती, तो वो तमन्ना क्यों है? उसका बेसिक कारण क्या है कि वहां पे इतनी अधिक सुविधाएं हैं, इतनी प्रिविलेजेस हैं, जो कि एक जाहिल गंवार भी वहां चला जाता है तो बाकी सब उसको सैल्यूट करने को विवश होते हैं. उसके अंदर क्या टैलेंट है उसको कोई देखना नहीं चाहता, और उससे लोग प्रभावित हैं. जिस तरह से वो लोग चलते हैं कैस्केड में, बाकी जनता तो वही देखती है, इसीलिए तो लोग जाना चाहते हैं. और क्या वहां जाकर जनता का सेवा करना जाना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई सेवा करने वहां जाता है, बस उससे प्रभावित हो जाते हैं. और बड़े से बड़े ऑफिसर, आईएएस हो, आईपीएस से सब रिजाइन कर करके, बिहार का अगर आपको पता होगा, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे आंखों के सामने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिजाइन करके और गए, चुनाव भी लड़े, जीते भी. आज के समय में मंत्री भी हैं, सरकार किसी की भी बने मंत्री, वो बने रहते हैं, इधर से उधर होते रहता है. अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप नाम खुद ही ढूंढ लेंगे. ये स्थिति है. तो क्यों है? आईएएस आईपीएस भी जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स का तो खैर बेचारों का कुछ कहना ही नहीं है, वो तो किधर के भी नहीं है. जुडिशियरी से लोग जा रहे हैं, तो इनकी तो आलोचना होती है कि जजेस को नहीं जाना चाहिए. लेकिन फिर जजेस क्यों जा रहे हैं? अब सारी सुविधाएं जब आप दिए हैं, तो फिर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि जनता हमारे जो ऐशो आराम, जो शौकत है, उसको जनता देखे. क्योंकि अभी जजेस को जो सुविधाएं दी गई हैं, उनको जनता से इवन की बार एंड बेंच में भी डिफरेंस रखा जाता है, दूरी रखी जाती है, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं. तो वो उसको उस तरफ उनका, क्योंकि वो भी इंसान है, एक सामाजिक प्राणी है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं भी जाता, मुझे भी लोग उस तरीके से देखते, मुझे समाज, बिल्कुल उन लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है और हमेशा के लिए कर दिया जाता है. एक बार आप बेंच में चले गए, फिर आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं. जिससे बात करते थे, उससे अपनी बात करेंगे तो आपके पीछे स्पाई लगा रहेगा कि आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं. तो आप किसी भी इंसान को बिल्कुल इस तरीके से अलग कर रहे हैं, तो उसकी मन की जो इच्छाएं बची हुई हैं, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं हम इसको छोड़ करके एक बार हम उधर चले जाएं. हर एक के मन में ये इच्छा है. आज हमको भी कोई एमपी का सीट मिले तो शायद हम भी नहीं छोड़े, हम भी ये ना कहें कि हाँ दादा, हम उसको छोड़ के हम आप ही के साथ जनसेवा कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां इतना ही लोभ दिया जा रहा है, सबकी मॉरलिटी वहां जाके फेल हो जा रही है. कोई इतना बड़ा अभी मॉरलिस्ट नहीं है जो कहेगा कि हमको मिल रहा है, आइए दादा और दीदी एमपी के लिए हम आपको नॉमिनेट करते हैं, तो नहीं जाएगा, चला जाएगा, बाद में वहां जाके भूल भी जाएगा कि हम किस काम के लिए आए थे. ये तो माहौल है, उस माहौल को चेंज करने में तो सबको योगदान देना होगा. और बेसिक चीजें जो हम कर सकते हैं, एजुकेशन में का जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत अच्छा बनाएं. क्योंकि अभी जो स्टैंडर्ड है, जो +2 के बच्चों को आप देखेंगे, अभी तो कॉपी चेक हो रहा है, फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, 2 लाइन लिखने नहीं आता, कॉपी खाली होती है. इंस्ट्रक्शन ये होता है कि सबको पास कर देना है, क्योंकि अगर आपने इनको फेल किया तो ये बच्चे स्कूल आना बंद कर देंगे. बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को स्कूल लाया गया है ना. 11-12 के बच्चों की ये स्थिति है अंदर में.
तो इन चीजों को पे जब हम वर्क नहीं करेंगे तो बाहर से क्या ही वर्क कर पाएंगे और कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो किसी तरीके से पास कर रहा है, खाली कॉपी पे पास करता आ रहा है, उससे आप उम्मीद करेंगे कि ये पूरी दुनिया बदल देगा, तो ये बहुत मुश्किल बात है। सब बेस में वर्क करना होगा। अगर पेड़ की जड़ें कमजोर होंगी और आप चाहेंगे कि पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे, तो ये नामुमकिन है। और Yes. यही लोग जाके लीडर बन जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले तो हार्डली ऑफिसर बनेंगे, बहुत मेहनत करने वाले जज बन जाएंगे, बट बाकी तो बनेंगे वो जो नेता मंत्री बनेंगे, वो जो क्राइम करेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, चक्कू को बेंच पे डाल करके खोस करके जिनको पेपर लिखना आता है, वही पार्लियामेंट में पहुंचेंगे आज के समय में। अदरवाइज ईमानदारी से काम करने वाले ना उतना पैसा जमा कर सकते हैं और न ही वहां पे सरवाइव कर सकते। इन केस अगर आपको मैंने नॉमिनेट करके भेज भी दिया, तो आप उस माहौल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। या तो आपको उसमें मिल जाना पड़ेगा या वो सब चीजें छोड़ के आनी पड़ेंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी दादा, बाकी तो सभी लोग समझदार हैं, कुछ इसमें मुझे कहने लायक दिखता नहीं है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सूरज प्रकाश दादा। दादाजी नमस्कार। नमस्कार दादा। दादा एक जगह मैं पहुंचा, वहां पर हेलो यस यस साउंड सर्कल। हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। मैं एक जगह पहुंचा, वहां बहुत सारे डेलीगेट्स थे, कंट्रियों के आए हुए थे। हमारे कुछ मित्र भी हैं, लीडर सीडर हैं। तो एक ने पूछ लिया कि आप मंत्री साहब से कि आप करते क्या हैं, फॉरेन के हेड थे। तो उनको समझ नहीं आया। फिर उसने पूछा, आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं? बोला मैं तो फिर नहीं बोल पाया कुछ भी। तो उसने खुद बोला, देखो मैं अपने खेतों में काम करता हूँ पार्लियामेंट अटेंड करने के बाद, और फिर अपना जीवन उससे चलाता हूँ, जो खेतों से कमाता हूँ, उससे मेरा जीवन चलता है। आप क्या करते हैं? तो हमारे लीडरों के पास कोई आंसर नहीं था। हम दादा इंसान तो बने ही नहीं अभी तक। सोना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, बैठना नहीं जानते, उठना नहीं जानते। तो ये समस्या बड़ी कठिन समस्याएं हैं। जब तक मैं इंसान का बोध नहीं होगा, मैं क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ, तो ये तो दूर की बात है ना दादा। अभी तो छोटी छोटी चीजें हम जान नहीं पा रहे हैं। वो आया है, मैं कौन हूँ, वही तो डीप रूटेड समस्याएं हैं। उन समस्याओं को तो विलेज लेवल से ही काम करेंगे, तभी वो समस्याएं को हम दूर कर पाएंगे। ट्रू दादा। सो वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट द वेरी टॉपिक विच वी हैव टेकन। So, Right. Madhusudan ji, would you like to talk on the topic? दादाजी Dada, Madhu, just hold on, Dada. एक minute. Yes, let us hear from the other side of the globe what is there about independence of the institutions. Yes, sir. दादाजी Namaskar. Yes, continue, Madhusudan Yes, ji. I'm in the U.S. right now. I'm at a kirtan retreat. We're doing kirtan like the whole weekend. Okay. So I'm sorry I came a little late, so I missed a little bit of the discussion. And I understand the talk was on democracy, the discussion. Is that correct? Democracy and the 4 pillars. Independence, that is executive, judiciary, and what do you call? विधायिका को क्या बोलते हैं? Legislative. Yeah. Right. Well, I'll tell you a story. Baba called this compartmentalized democracy. And there was one time, there was a meeting with Baba, and Baba had told all the Margis to divide up into groups. And he said, okay, I want everybody in Prout to stand over one section, and all the Eros Margis should stay in another section, and the STM Margis should stay in another place, and the VSS Margis
should stay in another place. So we all got arranged the way Baba wanted. And then Baba said, can anybody tell me what this is? And so many people tried to explain, Dadas tried to explain, nobody got it right. Finally, Baba said, this is compartmentalized democracy. So we have already within our own organization this very concept of compartmentalized democracy. But really, what is democracy? You know, if you talk about democracy in the current political environment, you know, Baba called democracy foolocracy, because the problem is that without an educated electorate, you can't get good outcomes from elections. That is it's too easy to fool the public, and I don't care what country you're in. In the United States, we have the same problem, and now with social media and all these things, people are getting so confused. It's very hard for democracy to work properly because people are not well educated. But I still support democracy, even in the current political context. And people ask me, why do you support democracy? I said, well, democracy isn't the answer. It's not going to solve our problems. And democracy doesn't even guarantee good government. But if you have democracy, or even some form of it, you can prevent some of the worst aspects of bad government. So it's a sort of a stopgap type of solution until we can get a system, as Baba gave in Proud, where you have a system that's based on morality. In the current system, it doesn't matter where you are in the world, any country you go to, there's no criteria for running for office. There's no morality, there's no kind of, it's just a question of who's got the money and who can get the votes. But in terms of character, there's no concept of looking for somebody of good character. There used to be something, at least a little bit of that in the United States. It used to be that people of bad character would have scandals and then nobody would vote for them. But now this is not true. We have people with all kinds of bad records and criminal cases and all kinds of things, and they still get people voting for them. So I don't know, you know, we're not there yet. You know, somebody asked me today, so why we don't have Proud anywhere in the world yet? I said, the world's not ready for Proud. You know, they're not, the world is not looking for the solution that we have. Once they start looking for it, we can provide, we have that solution, but they're not looking for it. They don't even understand the aspect of having special qualifications for your leadership. What happened? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए दादा, बोलिए विजयराव दादा। नमस्कार। अभी जुडिशियल लो इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल में एट प्रेजेंट दादा 3 करोड़ के ऊपर केसेस पेंडिंग है। यो अभी दादा बोल रहे थे, संजय जी बोल रहे थे, कोई नहीं। 28 years से पेंडिंग है। अभी 100 years टाइम देने से भी ये 3 करोड़ केसेस खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम जो है एट प्रेजेंट, वो सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये सबको मालूम है। 3 करोड़ केस पेंडिंग है, सबको मालूम है। ये प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं है क्या, या सुप्रीम कोर्ट जज को मालूम नहीं है क्या? सबको मालूम है। खत्म होगा, 100 years देने से भी खत्म नहीं होगा। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। इतना ही है दादा। नमस्कार। Yes, bro. Thank you. System must change. I agree. Yes, Madhusudan Dada, you were disconnected. If you can continue, please. Thank you. Yes, please. Okay, I don't know how much you heard. I don't know how much you heard of what I was saying. No, you were about to conclude that democracy is everywhere in the same fashion. So yeah, I mean, what did they? Somebody once. I'll paraphrase something somebody once said. Democracy is the worst form of government except for all the others. Can you please repeat? Yeah, democracy is the worst form of government except for all the others. So, you know,
it's not going to get us to where we're going, but it's useful in the current context. But in a proud society, we have a different approach because we have economic democracy, and economic democracy is much more important than political democracy. Because if you have political democracy, even if the democracy works, but you don't have economic power, then it's useless. You know, you vote for people who are going to run the government, but the money is still in the hands of the big people, you know, big corporations and billionaires and whatever. The capitalists still run everything. So democracy isn't going to get us to the point where we can solve the real economic problems of not just any one country, of any country. You know, so it's just a tool. But when we look at future society, there's a lot of things that we can do with it, but we have to remedy some of the defects first. Thank you, Dada. Thank you very much. I think Baba also says at the end that he's explaining that why democracy is phulocracy and all that you must have gone through. But Baba says that democracy is not a very good or simple system. But unless an alternative, better and more agreeable theory or system is evolved, we will have to accept democracy in the presence, in preference to other system, and make use of it for time being. Means, but today the situation is such that people are forced to believe that there is no system better than democracy. Rather, there is no system possible better than democracies, which is wrong. And that is what the alternative we told is the economic democracy, not this political democracy. But there is also the reasons behind why they propagate this system, because you know very well that for capitalists or capitalism, this is the very nice place to flourish. So they don't want to embed in your DNA that this is the best system available on this earth, that there cannot be better system than this. But we Proutists cannot be the victim of their dictates. So we will think that we should go something like economic democracy. Yes, Isita Subhaji, please. Thank you. Yeah, Namaskar. I agree. I listened to the conversation and few points I thought, and I might be wrong, but I think that yes, we are till now discussing all the things and the action plans as well. What I could make out, please correct me if I am wrong. The first thing, what Poonam Didi said. Sorry, I joined a little late. I had an office call, तो भल्ला दादा का मैं सुन नहीं पाई थी. Okay, Didi, बोलिए. और राजेंद्र दादा का भी इतना नहीं सुन पाई थी. So, Poonam Didi said was correct. कि all the immoralists ऐसे लोग बैठे हुए हैं, all these people like these are sitting, and those who are so immoralist, and we cannot make them spiritual in a single day. So as a moralist, we have to be strict now to reinforce moralism. So we have to be smart. If we are so stiff, we will be cut down. Second point, what I understood today, that economic independence is very much important. And this is the second session where I got to learn that the voters have to be educated. So by educated, I understood that not the literate, but educated. Even a poor farmer who has never been to school at any village can be educated and wise. So third point I understood, I'm saying this because I will be posting this for my people, और ये जन्मे राव ज्यादा जो बोले वो भी एकदम सही बात बोले. And third thing which I think I should be trying to achieve, we should be trying to do is economic independence, and side by side, if we instill moral values, and that we cannot do, we just have to awaken the soul through spiritual elevation. We just have to make the suffering population realize that yes, the God is there, and in any form, in any religion, in any path,
because Baba is not dogmatic. It's not necessary Anandamar. That he is looking after you. So, but we have to be economic independent. So for that, we need to take action. So we should generate more entrepreneurship, Right. education, and we should instill side by side assessing the mental capacity of the population we are dealing with, how much they can take at one time. We cannot tell them bare truth. True. Smart, that is what you mentioned in the very beginning, that we have to be smart in. Yeah, Yes. we cannot tell a child that no, we cannot be harsh that no, you can't eat it. We have to tell that this is not good. I can give you better. I mean, softer ways. And we have to, as I had heard another lecture of these, I have been listening to these sessions earlier also. So I learned, and thank you so much, my seniors. I have learned whatever I learn from here because I really don't get time to read. I'll make sure I'll read in future. This thing I also learned, which I'm going to post it today, that the environment is also getting damaged, the health, the everything, and everything. The cause is capitalism, as everybody here, the speakers have told. So capitalism, one more smart thing I have remembered, ki we don't have to be upright, straightforward, head on with Yes. capitalists because they are very powerful now. I agree. So, but we will keep on carrying our journey. We will start in action plan. I think this is high time we should start the cooperative and not just discuss it. And I am there. In any sort of thing to be executed, I can go to the village level. I can go to the ministry level as well. So I think we should just start it. See, once we start, our people are very naive and innocent. Bhakti hai. But we have to be strict and we have to reinforce that dharma also. For that, we have to be strict and smart. That's what I wanted to say. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, Rakesh ji, you want to say something? Yes, दादा एक्चुअली देखिए ये कई बार अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की तो उस पे मैं मेरा थोड़ा सा आपसे क्लियरिफिकेशन मैं चाहता हूँ बोलिए। कि आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है कि आर्थिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि अभी तो आर्थिक स्वतंत्रता है ही, जो भी जुगनबर्ग जितना मर्जी उतना कमा सकता है, टाटा जितना मर्जी उतना कमा सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। अभी तो वैसा ही चल रही है। हम ये सही है या कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सही है दादा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ओके दादा। और दीदी एक चीज, और दीदी का एक चीज जो मैं काफी अच्छी बात कही, दादा केवल हम लोग बात करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। कोऑपरेटिव की बात कर रही है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, दीदी को स्टार्ट करना चाहिए, सब मिलकर हम लोग। धन्यवाद। राकेश जी, पहली बात की cooperative is the very basic function of the Proutist economy. You also know, and that's why we like it. And at my place, I have started. So this is one point. So it is not, and there is a cooperative department in our organization which is working very thoroughly. I think Sanjay Devji is also here, and hope it's the same Sanjay Dev. And we are working on that, and we will take Didi your help while our cooperative is in formation, and we will include you too, so that your experience, your contacts, we will be utilizing. First point. Second point is economic democracy. The very first thing is that economically everybody should have an at least basic minimum requirements has to be guaranteed, and that has to be guaranteed through purchasing capacity and not through dole outs like it is being done today. That is one part of it. And that is the first primary requirement of even this democracy to flourish. Otherwise, आप किसी को भी पैसे दे करके वोट खरीद सकते हो, और जो कि होता है आज। लेकिन यदि आदमी को गारंटी रहेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन दैट
थ्रू माई परचेसिंग कैपेसिटी आई विल अर्न माई लाइवलीहुड, तो वो व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग से डिसीजन ले सकता है कि whom I should vote, whom I should bring in power. That is one part of it. Second is दादा, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है. दूसरा जो आपने बोला उसका जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रउथ में पहला ही जो प्रिंसिपल है कि बिना समाज की इसके एक लिमिट से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, बिकॉज फिजिकल स्टफ इज लिमिटेड. एंड इट्स सो जो आप बोल रहे हैं कि टाटा बिरला आज भी फ्रीडम है, so I think it is not in that short notice I can educate you, but I'll request you, and you may be knowing also, it is so clearly threadbare clear in Baba's pravachan of economic democracy, and then what do you call decentralization of economy, and there are a few chapters which I can share with you, and you go through, then concept will be clear. So here we are not to clear those concepts, but yes, there has to be mix, mean and max available, and this mean max will keep on increasing. This minimum will keep on increasing, and that is what we call the live society. उससे ही समझ में आएगा कि समाज जो है एक जीवंत है, न कि डेड समाज है. So that way I would like to, yes, Madhusudan ji would like to say something on the topic. Please, thank you. Yes. One very important point, we should stop making our criticism of capitalism, because Absolutely. everybody, there are kinds of people in the world today. There are two kinds of people in the world today. One is the people who have money, and the other is people who think that someday they're going to money. Those people all think that capitalism is their security. So if you attack capitalism, you feel you're going to undermine security. So he may be wanting to tell that just criticizing capitalism is not going to help. So there is a system change, and for that, yes, Madhusudan ji, you are there. I'm back. Yeah. I'm back. Sorry. The punchline. The object that we should be focusing on is defect of democratic socialism. Yeah. It is the influence of democratic socialistic policies that's propping up capitalism artificially. If you remove democratic socialism from capitalism, capitalism would fall apart. Overnight. Even in America, the only thing that keeps this government running is socialist policies, not capitalist policies. Absolutely. And Baba attacked that. Baba wrote, he's very much attacked democratic socialism because it delays the inevitable demise of capitalism. And so there's a lot of defects in socialism, and those are the things that we need to be attacking. The other thing I wanted to mention while my Wi-Fi is working is that I believe that Prout needs to get away from the concept of work-based guaranteed basic necessities. Means that people work in a capitalist society, your livelihood depends on your income from work. And as long as that happens, even in a Prout society, if your livelihood depends on your labor, you will not be able to get your basic necessities of life, because labor, through the technological developments and AI and all of this, labor is going to be diminished more and more as time goes on. And if we require people to work in order to get their basic necessities, we're not going to be able to make it work. You won't be able to pay people enough, and it'll be unproductive. Rather, an idea that I got from Dada Vimalananda, when an economic unit is set up, that economic unit is itself a cooperative, and all the members of the economic unit are shareholders. So we're used to government where we pay taxes and feed money into the government. In a Prout system, the economic unit will pay dividends to people, and those dividends will give you enough money to provide your basic necessities of life. Maybe. Only the basic necessities. So for additional, then you go to work, and everybody will work. But because you don't have the compulsion, you don't have to be forced to work in order to eat.
then you'll be able to choose the kind of work that you enjoy, that the kind of work that you're suited to, because that money is only extra money. But in a work-based society, as capitalism gives us, you can never, even in a proud society, you can't provide the basic necessities of life if it's an income-based system. Yeah, got your point. If you can follow what I said. Yes, yes. In cooperative system, you rightly said that even shareholders have their say, even if they do not work, probably. But yes, there are some points that the shareholders in Proud has to work. It is not that they have given many money and their share they will enjoy only. So they have to have their maybe for some time, but they have to work also in cooperative. Dada, may I say something? Yes, yes, Dada, yes, Dada. Now the action regarding action plan, the elections are very short time ahead. Yeah, yeah. And regarding the solution, we cannot teach morality right now. Yeah, yeah, right, right. But there is a very powerful media called mass media, and a step should be taken compulsorily by the election commission. All media houses should give those sermons on TV every day and many times a day, whom they should choose, why they should choose. So this way education will propagate. Very good point. Today my maid asked leave for tomorrow. She will go for Ramlila ground. She will be paid 1,000 per head. She has made a few followers to accompany. So this cannot be the way. For immediate purpose, we should convey through the media. Yeah, you got your point, Dada. Even Proud believes that people say that media is the fourth pillar. No, they are will use for the education, educating the people. That should be the aim. And you rightly said, even people can be called on media and discuss what you are going to do when you are coming in power. Let people decide what is their agenda. People are smart enough to listen them and make their decisions. So many Dada debates are going on nonsense way. Right. And fighting. Nobody is concentrating. It should be purposeful or not. I agree. वो नहीं होगा, सॉरी लेकिन वो कभी नहीं होगा। एक आइडियल समाज बनेगा नहीं, ये हम लोग वो दैट्स व्हाट वी हैव टू अचीव। नहीं करेंगे ये लोग, बट बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस, पॉलिटिक्स इज बिजनेस, इलेक्शन इज बिजनेस, दे स्टील द डेटा through various projects. They will never do it. If they do it, they will fall. So we have a very different system, right from the education up to the getting the job, as Dada explained just now, and the politics and the judiciary. What kind of people will go to judiciary and service sector? You can call in nutshell service sector. And whether they will be enjoying the money power as they are enjoying today, and probably for that and for San and Shaukat, jaisa Poonam Didi bol rahi thi, people are willing to go to politics. So that situation will not exist, and it will be a different world altogether. So we have to work for the system change. But one more thing, I'll repeat that what Madhusudan Dada told, we do not always criticize politics. See, capitalism is taking the advantage of loophole in democracy, and they are becoming capitalists. So that is why I feel they are very comfortable with political democracy. And these politicians are also very comfortable because they fill their pocket from them. So it is all joining hand of economy and politics together. They are becoming more powerful. And again, a saying comes to mind that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And that is evident everywhere across the world. So we need to think of the system change and just not, but yes, till there is a system change, we need to do whatever we can by creating a circumstantial pressure
or educating the people or the mass. Thank you so much. Yes, anybody would like to say something? Let it be a concluding remark, because time is also up. Yes, Rakesh जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो मैं कहा वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक ही है या डिफरेंट है? बस एक ही सवाल, yes or no? दादा, आप जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ सम कैपिटलिस्ट, सो दैट फ्रीडम इज नॉट देयर. That is what I told you, the very first principle, that samajadeshen bina dhan sanchaya akartavya is going to address this point there only. But yes, this will come in phases. Suddenly it's not going to come. We have to see that what changes is required in existing system to moderate that, to move towards our goal. That is what I am, with my small knowledge, I'm not the expert, but with my small knowledge, I would like to say like this, your answer. Thank you very much, and hope everybody, thank you so much. And with the end, I would like you all to thank you. Yes, somebody is saying something? Yes, Yeah, obviously. Sita ji, boliye. Obviously, me the junior most. दादा काम कब शुरू करेंगे? Kam, Didi, you can talk to me offline. I think we are working. We are, since 1 year we are working, and we have 3-4 cooperatives also working. But for the say, it is not cooperative, it is a self-help group. Because Dada, but how much finance are we generating? Why are we not covering it in media? let me tell you my place. So we will talk offline, Isadi. ठीक है दादा, ठीक है Okay. दादा. So we have to see Namaskar that everyone. Thanks a lot. how political democracy can be converted into economic democracy, and for that we should work, and that is the only solution. So thank you very much, and see you next Saturday. Thank you so much, everyone, for joining in time and participating. Thank you so much. So with Thank your you, Dada. Thank you. thank you. So with your permission, I am closing this session, please. Thank you.